I've been very serious about my skin since 2022 because before that, I faced every single skin problem that you can imagine. Oily skin, acne marks, and because of that, a really dull looking skin. But the good part is, I've also found the solutions to every single problem, and they're way simple than you may think. But more importantly, I found the proper way to use these actives क्योंकि actives तुम्हारी skin को बहुत damage कर सकते हैं if you don't use them properly. You see, the problem is no serums will give you the results you're looking for if you don't use them properly. क्योंकि serums skin को repair नहीं करते, वो skin को stress करते हैं. So you actually need to use them very cautiously while keeping your skin balanced at all times. And I'll tell you exactly how to do that. So this is not your regular buy that product sort of video. I'm not here to sell you random products. I'm here to tell you what actually fixes what and how to use them properly without damaging your skin. But first, I'll tell you how to keep your skin barrier healthy. क्योंकि बिना healthy skin barrier के कोई भी serum तुम्हारे face पर सही से काम नहीं कर सकता. Before fixing oil, acne, glow or dryness, you need to fix your skin barrier, जिससे कि सारी ही चीजें तुम्हारी skin पे properly काम कर सकें. And ceramides will help you do exactly that. तो अगर तुम्हारी skin oily हो जाती है but still feels tight, breaks out randomly and reacts to everything, that's not a sensitive skin. That's probably a damaged skin barrier. और प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग इसको रियलाइज नहीं करते और अपनी स्किन के ऊपर और ज्यादा एक्टिव्स यूज करना शुरू कर देते हैं, थिंकिंग देयर स्किन नीड्स मोर ट्रीटमेंट व्हेन ऑल इट नीड्स इज प्रोटेक्शन एंड रिपेयर. जब मैं अपनी स्किन का एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन ठीक करने की कोशिश कर रहा था तब मेरे फेस पे रैंडम ब्रेकआउट्स तो हो ही जाते थे, पर ज्यादातर प्रोडक्ट्स कुछ दिन काम करने के बाद काम करना बंद कर देते थे सडनली और फेस पे रिएक्ट करने लगते थे. और ऐसा इसलिए नहीं था कि वो प्रोडक्ट्स खराब थे. It was actually because my skin barrier was compromised, so nothing could work consistently. So once I fixed my barrier, everything started working better, and here's how you can do the same in a very simple way. While most advice online jumps straight to actives like salicylic acid, retinol, and vitamin C, I think you should first focus on your barrier health. Because no one tells you that using actives on a broken barrier एक टूटी हुई बाल्टी में पानी भरने जैसा होगा. It may hold some water temporarily, but it will never get filled completely. But the best part is, using ceramides to repair your skin barrier is surprisingly easy. You just need to switch your moisturizer to a ceramide-based moisturizer and use it properly. Ceramides actually natural lipids होते हैं जो तुम्हारी body naturally produce करती है, और इन ceramides के mainly 3 काम होते हैं. Seal the moisture inside, keep irritants outside, and maintain skin balance. प्रॉब्लम तब होती है जब इन सेरेमाइड्स का नेचुरल लेवल ड्रॉप हो जाता है ड्यू टू ओवर वॉशिंग, एक्सफोलिएशन और कांस्टेंट एक्टिव यूज. क्योंकि तब तुम्हारी स्किन से मॉइस्चर लीक होने लगता है एंड योर स्किन स्टार्ट्स ओवर प्रोड्यूसिंग ऑयल टू कॉम्पेंसेट फॉर द ड्राइनेस. एंड वंस यू स्टार्ट ओवर वॉशिंग और यूजिंग मोर एक्टिव्स टू फिक्स दिस ऑयलीनेस, you get stuck in this cycle. This is why a ceramide-based moisturizer or a serum should be your non-negotiable base. Especially अगर तुम actives use कर रहे हो. And here's a method of using a ceramide based moisturizer that no one ever told you. अगर तुम्हारी skin बहुत sensitive है और acid type serums लगाते ही tingling sensation होती है, especially salicylic acid के साथ, then this method of applying a moisturizer will be perfect for you. तुम्हें बस serum से पहले एक बहुत thin layer apply करनी है ceramide moisturizer की. ऐसा करने से कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट डायरेक्टली तुम्हारी स्किन को अटैक नहीं करेगा, और वैसे भी सारे BHA एक्टिव्स ऑयल सॉल्युबल होते हैं, सो दे विल वर्क जस्ट फाइन. एंड नाउ यू कैन लॉक द सीरम इनसाइड विद अनदर अ लिटिल थिकर लेयर ऑफ द मॉइस्चराइजर. So you see, repairing or keeping your skin barrier healthy using ceramides is not that difficult. And now you can finally start treating your oiliness using actives like niacinamide. If your skin gets oily within a few hours, especially around the T area, niacinamide is the ingredient you need. But don't start using it without proper understanding. Because most people with oily skin are stuck in a loop. Their skin gets oily, so they wash it, which makes their skin dry, so the oil comes back even stronger. और इसी की वजह से oily skin वाले लोग ज़्यादातर moisturizer लगाना skip करते हैं, which only makes things even worse. I know this because I've dealt with oily skin for a very long time. Most people treat oily skin by removing oil with harsh face washes, and that almost never works because they get stuck in this never-ending loop. So instead of finding and investing on products that can remove oil,
You need something that can regulate the oil production, and niacinamide is exactly that. Instead of stripping and triggering more oil, niacinamide tells your skin, you're safe. You don't need to overproduce any more oil because it does three very important things. It balances sebum production, it strengthens the skin barrier, and it reduces redness and inflammation. But more importantly, when used consistently, niacinamide does not dry your skin, so your skin doesn't have to produce even more oil to compensate, and therefore your skin becomes less oily over time. But with oily skin comes clogged pores and acne. पर इसको भी तुम बहुत आसानी से ट्रीट कर सकते हो यूजिंग सैलिसाइलिक एसिड। एक्ने की प्रॉब्लम स्किन के सरफेस पे नहीं होती, इट स्टार्ट्स फ्रॉम इनसाइड द पोर्स, and that's exactly where salicylic acid works. The problem is, most people apply some sort of spot treatment, trying gel, or some random anti-acne product. And that's why acne keeps returning to the same areas. क्योंकि ये products pores को अंदर से कभी properly साफ करते ही नहीं हैं. They just temporarily treat the pimple on the surface. I know, most advice focuses on killing the pimples. But I'm saying this. Why not kill the problem before it becomes a pimple? सैलिसाइलिक एसिड तुम्हारी स्किन के सरफेस को ड्राई नहीं करता, वो स्किन के अंदर जाके ऑयल और डिब्रीज को डिसॉल्व कर देता है, बिकॉज सैलिसाइलिक एसिड इज एक्चुअली ऑयल सॉल्यूबल, which means it can do three very important things. It can penetrate deep into the pores, it can unclog trapped oil, and therefore it can reduce blackheads and whiteheads. तो जब तुम सैलिसाइलिक एसिड को सही तरीके से यूज करोगे तो वो प्रॉब्लम को पोर्स के अंदर ही खत्म कर देगा इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू ट्रीट देम फ्रॉम द आउटसाइड। इसीलिए मैंने तुम्हें ऑयल कंट्रोल पहले बताया था, बिकॉज सैलिसाइलिक एसिड वर्क्स बेटर आफ्टर ऑयल कंट्रोल, नॉट बिफोर दैट। एज आई सेड, तुम टूटी हुई बाल्टी को कभी नहीं भर सकते, एंड आई नो दिस बिकॉज आई हैव मेड दीज मिस्टेक्स, तो मैं तुम्हें वही गलतियां रिपीट नहीं करने दूंगा। बट वंस यू ट्रीट योर ऑयल एंड एक्नी, you may notice some marks left behind or uneven tone or dullness. पर इन चीज़ों को ट्रीट करना by far सबसे आसान है. All you need is vitamin C. If your skin looks tired, uneven or lacks a general glow, vitamin C is the upgrade that your skin needs. ज़्यादातर लोग vitamin C यूज़ करते हैं अपने skin issues को fix करने के लिए. But they forget that vitamin C does not fix anything. It only enhances. Vitamin C ने मेरे लिए तभी सही से काम करना शुरू किया था जब inflammation और oil under control आ गए थे. And this is something that no one will tell you. तो vitamin C तुम्हारी skin पे सही से तभी काम करेगा जब वो calm और stable हो, ना कि irritated और broken. क्योंकि vitamin C सिर्फ 3 ही काम कर सकता है. It brightens the skin tone, it fades acne marks, but more importantly, it supports collagen production. But it only works well when your skin barrier is intact and your oil and acne are under control. इसीलिए vitamin C oil और acne control के बाद आता है, not before that. Now, there's one skin type that struggles a little differently. वो oily होने के बजाय dry होती है. And although I don't have a lot of experience with dry skin, I feel the need to talk about it because the ingredients that people usually use on dry skin are a little misunderstood, because what they should be using is hyaluronic acid. Dry skin does not lack oil, it lacks water, and hyaluronic acid gives you exactly that. ज़्यादातर लोग dry skin को ट्रीट करते हैं उसे ऊपर से सील करके with heavy creams, पर वो ये भूल जाते हैं कि उनके पास अंदर लॉक करने के लिए कोई मॉइस्चर है ही नहीं. And that is the exact problem that hyaluronic acid solves. Because it works by pulling the water into the skin first, which you can then lock inside. Hyaluronic acid सिर्फ एक काम करता है, it attracts and holds water inside the skin, जिसकी वजह से तुम्हें एक temporary plump भी मिलेगा and it increases comfort. तो इसीलिए जब भी तुम hyaluronic acid serum यूज करो, make sure your skin is slightly damp and always seal it inside with a moisturizer. और इसके ऊपर तुम्हें कोई बहुत heavy moisturizer यूज करने की नीड भी नहीं होगी. So now you've seen how each skin problem needs a specific ingredient in the right order. Skincare isn't about using everything you see on Instagram. It's about using the right ingredient for the right problem in the right order. So don't let ads confuse you. Every product is a good product if you can use it correctly. Even the hair products. So if you felt a similar confusion with hair care, hair fall, dryness, dandruff, oily scalp, मैंने इन सारी चीज़ों के भी बहुत आसान solutions दिए हैं ऐसी ही एक सिंपल सी वीडियो में.
ऑल्सो नेवर फॉरगेट टू रीड द यूसेज डायरेक्शंस ऑन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि एक्टिव्स तुम्हारी स्किन को काम या रिपेयर नहीं करते, वो तुम्हारी स्किन को स्ट्रेस करते हैं. सो ऑलवेज बी कॉशियस एंड ऑलवेज रिमेंबर, आई लव यू. थैंक यू फॉर एवरीथिंग.